Thank you. मैंने आपको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दिया just so that you would eat something and relax, okay, and then you would be back. I utilized my time fully. Thank you very much. I'm glad. Thank you so much, sir. Class is all yours. Okay, thank you. Good evening, class. Welcome to this batch number 12, first class for the CSS essay. And I'm looking at all these names. It's good to see all of you here. Let's set some of the class rules right in the beginning. If you don't have a name, I won't be able to answer your question. ये जो Galaxy A20, Galaxy S6 Edge वगैरह आपके सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि आप if you don't have a name, तो please take care of your identity because बगैर identity के बंदा क्या जवाब देगा? MPhil CS कोई समझ नहीं आती आप कौन है? Oppo SS सिविल सर्विस में देखें सबसे पहली चीज क्या है? Your identity. Do you exist as a person or do you exist as a Vivo S1 or something like that? English 19018 something like that. You must have a name. ठीक है? देखिए बाकी सब लोगों के नाम है यहाँ पे. Walaikum salam. And your chats will be, Ms. Mahmouda, will that be private or open for others also? So far, the chat is all private. Walaikum salam. All right, let's start. My name is, as you can see, Dr. Arif Javed. The doctor part comes from my PhD in computational linguistics from University of Malaya in Malaysia. And some of my education is from UK with a master's in English language and linguistics from Lancaster University, followed by a 1.5-year diploma in creative writing, during which I learned the skill of essay writing also and how to teach essay writing, creative writing. And then there is a 1.5-year diploma from the University of Kent, University of York, on educational diagnostics, which helps us to practice this differentiated learning in large classes. I've also done a computer-aided language learning diploma from University of Malaya in Malaysia, which gives me a lot of, I would say, an expert edge over others in using technology in teaching. No, Bushra, you are not allowed to record the lecture. And if you recorded it anyway, the NOAA has many ways of knowing it. And coordinator के साथ जो है वो बात कर लें, they will tell you that there are proper legal procedure against this also. When we don't allow this, we don't allow this. ठीक है? All the NOAA transmissions, ये जो इस वक्त भी जो transmission जो इस वक्त जो Zoom की जो जा रही है, they are all properly monitored by the cyber cell also. Violation तो नहीं हो रही. So this is my introduction. Have been teaching CSS for more than 20 years now, and for some time I have been associated with FPSC in paper checking also, essay and Pressy, both of them. So this gives me a unique perspective on teaching CSS. What are the broad areas where students are mostly failing? I was able to come up with a study plan or teaching methodology by which students can be बातें जो है वो बाद में होंगी. Now here is the essay study plan that we are यहाँ पे कि जब हम शेयर स्क्रीन में है तो चैट नजर नहीं आ रही. ठीक है?
तो आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दे सकूंगा. So as you can see that it is, the duration is 8 lectures, 24 hours, but our total teaching of CSS essay is about 60 hours, not just this 24 hours is the contact hours. Lecture number 1 is about introduction to the essay paper. I'm going to show you the CSS essay paper, its syllabus, what is the guideline according to which those papers are made, and then what is the marking criteria. अगर हमारे सामने syllabus है तो फिर लाजमी बात है कि FPSC की तरफ से जो marking criteria है वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि essays में लोग fail. Every lecture is divided into 2 parts. First, it's 1 hour 20 minutes, and then there's going to be a 20 minutes break. And the second part, so all my lectures have these 2 parts. Of writing in essays, सबसे पहली बात ये है कि essay writing is basically writing, you see. So it is the first one must understand what writing is and what are the types of writing which are used in essays and their structures also. We're going to discuss these. ये जब भी लोगों का कैमरा ऑन होता है तो हमें ख्याल आता है कि कैसे मजे से लेट के और पड़े हुए हैं कहाँ पे और they are watching all this, listening to all this. मजे से चारपाई पे पड़े हुए हैं, कहीं कैमरा ऑन हो गया. Okay. In the lecture number 2, I'm going to talk about critical thinking skills for CSS essay. As you must have noticed that in CSS, the head examiners reports, if you happen to see them, mostly the complaint is that students lack, our candidates lack critical thinking skills. What are those critical thinking skills and how to develop them? We're going to have a lecture on that, and how to select the CSS essay topic, because it has been seen that many people fail only because they have not been able to select the topic properly, and then that leads to a number of mistakes which ultimately leads to failure. So the first 2 lectures that you can see that they are basically a general introduction to essay writing, and within which in the next lecture, my focus is going to be your mind, basically your brain, as it is you who are going to write the essay actually. So it's important to work on and train you in your thinking skills. From the lecture number 3, we are going to come to actual essay writing. Once the essay topic has been selected in lecture number 2, logical sequencing methods, brainstorming, mind mapping, all these methods I'm going to train you in. And this leads us to correct outline writing methods. जरा एक चीज थोड़ी सी जरा मैं इसकी explain कर दूं before I proceed further with this study plan, that you are in a skills learning class. No, Noah does not record the classes. Sanya Shoga. Coordinator, can you please open this chat to everybody, because people are unable to see others' questions. And I have done. Okay, right. Thank you. Acha. One of the main things which you need to keep in mind right at the beginning in the essay paper is that this is a skill-based paper. The others are content-based, like your Pakistan affairs, international affairs, this current affairs, Islamiyat, and whatever optional subjects you're taking, they are content-based subjects. What's the difference between the content-based subject and the skills-based? Content-based has certain, say for example, you have books there and notes and concepts which you study, and then those concepts and all that information has to be processed in a certain way according to those questions in the examination.
Whereas when I say that this is a skill-based paper, so it means that essay writing is basically a skill. You have to learn the skill. If you believe that you can, uh, hello, can you hear me all right? Is my voice clear? आप अपनी चैट सेटिंग भी चेंज करें और अब आप एवरीवन को भेजें, आप प्राइवेटली भेज रहे हैं. Okay, so the voice is clear, right? Somebody was claiming that it's not, complaining that it's not. All right. मरियम अफजल चैट उस पे करें, एवरीवन पे करें. Okay. Okay. So you are learning a skill. ये जरा ज़हन में रखिएगा. When you are learning a skill, तो skill आती है practice से. Skill देखने से नहीं आती. Skill सिर्फ उसको पढ़ लिया ऐसे को या उसकी आउटलाइन में आपको दिखा दूं, तो you're not going to learn anything from that. Skill सीखनी पड़ती है, process सीखना पड़ता है. That is why in our classes here, in my essay classes, I focus on teaching the skill and not the content. उसकी वजह ये है कि essay basically is not a test of knowledge. It's not a test of information. Do you understand this? The other subjects are test of knowledge. How much do you know about, say, for example, criminology or international relations, or how much do you know, or how well do you know the concepts of political science or sociology or psychology or history? How well do you understand these? But essay is not based on content. It is how well do you articulate your ideas? How well can you present the information? How is your expression? How do you express yourself? How do you formulate your opinion? And how do you present the information that is required there? Okay, so this is how you on what you focus on the skill-based papers. अच्छा, एक तरह थोड़ा सा एक जैसे हमने रूल रखा कि जो जिनके नाम नहीं है उनको जवाब नहीं मिलेगा. दूसरा ये है कि आपकी अगर मेरी क्लासेस में हमेशा ये होता है कि one person speaks at a time. Either I speak and you listen, or if one of you is talking, means writing, I will be quiet. ये जो ख्याल है कि मतलब when I'm speaking, तो आप लोग अपना मैसेज टाइप करने में लगे हुए हैं, which means you're not listening to me, and I don't want that. So if you're listening to me, this means there will be no questions. और थोड़ी देर बाद मैं अपना लेक्चर के दौरान I will be giving you opportunities to ask your questions. So please hold your questions. Then अगर आप अभी questions करेंगे ना अभी सारा कुछ, तो इसका मतलब है आप मेरा सवाल नहीं, मेरी बात नहीं सुन रहे. So if you are not listening to me, do you think I should listen to you? So please focus on what I'm saying, because this is very important. This is the difference between passing and failure. 14,000 बंदा क्यों फेल होता है, 12,000 बंदा क्यों फेल होता है पाकिस्तान में CSS में? Any reason for that? One single reason, and that is people believe that it is a content based. और वो क्या करते हैं, बुक्स पकड़ी ऐसे की, इधर उधर से लोगों की आउटलाइंस देखी, एसेज बनी बनाई एसेज, और कोशिश की याद करने की, और उनका ख्याल होता है कि हम जाके CSS में लिख भी लेंगे. आपका क्या ख्याल है कि 10,000 बंदा बगैर किसी वजह के फेल होता है? ये जो ख्याल है कि FPSC लोगों को बस आधे को किसी को फेल कर दिया, किसी को पास कर दिया, नो. FPSC is a very professional organization. It has won my respect because of its professionalism. Although a very, I would say, small organization, very few people, but they are professionals. और इसकी एक मैं मिसाल आपको दूंगा कि मिसाल इसकी सिर्फ एक है कि पूरा मुल्क आपका कौन चला रहा है? Establishment. It's the bureaucracy actually. Politicians तो आपको पता ही आते जाते रहते हैं, military वो भी आती जाती रही है. What is the constant in this country? It is this civil service. और पूरी civil service जो है
वो गुजर के आती है एफपीएससी के ये जो सुई का नक्का है बारीक सा, सब इसमें से गुजर के आते हैं. This organization alone, I would say, is responsible for keeping the country how it is today. Otherwise, आप इसके स्टैंडर्ड्स को लोअर कर दें, आप देखिए ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल होता है, आप देखिए मुल्क कहां जाता है. सो ये जो लोग आपको सिखाते हैं ना कि एफपीएससी एक पता नहीं किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, कभी रिजल्ट आ जाता है, कभी ये है, कभी वो है. फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो, इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन सीएसएस, लर्न टू रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप इम्तिहान दे रहे हैं. अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते उसको, व्हाट इज इट गोइंग टू गिव यू, व्हाट डू यू थिंक? सो ये चीजें सोचने वाली हैं. ये चीजें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है between what you're doing. By giving respect to FPSC, you are giving respect to yourself. You are doing CSS. You respect yourself for appearing in the highest examination in the land. Okay, so these are some of the basic things which you must keep in mind, that when you are dealing with a skill-based topic, तो फिर आपने स्किल सीखनी है. स्किल क्या है? उसने एफपीएससी ने बड़ा क्लियरली अपने सिलेबस के अंदर कुछ चीजें जो है वो डिफाइन की हैं. हम ये स्टडी प्लान देखते हैं और सिलेबस देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये वाली स्किल सीखनी कैसे है और इस स्टडी प्लान के अंदर क्या वो मौजूद हैं कि नहीं. दूसरी तरफ वो तरीका है पढ़ाने का जिसके अंदर मैं आज फॉर एग्जांपल कोई ऐसे खोल लेता हूं और आपको भी दिखा देता हूं और उसकी स्क्रीन के ऊपर वो पीडीएफ उसकी शॉर्ट्स दिखाता रहूंगा कि ये देखें जी, ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये देखें राइटर ने इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये आपने भी इस तरह लिखना होता है, और ये देखें बॉडी पैराग्राफ्स हैं और ये आउटलाइन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम इट? नथिंग. सो ये फर्स्ट आपका टेस्ट है आपकी अपनी सोच का कि ऐसे राइटिंग करनी है तो करनी कैसे है. मेथड सीखना है या कि हमने रटे रटाए एसेज जो हैं वो करके जाने हैं. द चॉइस इज विद यू. So that's why I believe that there is a need to teach the outline writing methods properly, because outline मैं बहुत ज़्यादा ऐसे की planning के ऊपर I emphasize a lot, because देखें जो प्लानिंग का जहां तक ताल्लुक है, ऐसे की सारी सक्सेस ही प्लानिंग के ऊपर है. इट्स अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, 2500 वर्ड्स. यू आर गोइंग टू स्पेंड 3 hours on that, and if you can't plan, जैसे वो कहते हैं ना कि failing to plan is planning to fail. So when you are planning, the first thing is brainstorming on a topic. Then there is the mind mapping. I'm going to train you in all this, and then logical sequencing method, and ultimately in lecture 3 we reach the correct outline writing methods also. Next stage is the introduction, because when the essay starts, it starts with the introduction paragraph. There are proper introduction writing methods within which introduction के अंदर ही फिर thesis statement आती है. So I'm going to train you properly in writing the thesis statement also. Lecture number 5 आपने introduction लिख लिया तो अब body paragraphs आते हैं. अब ऐसे के अंदर जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो तो सिर्फ एक एक पैराग्राफ है ना. एक्चुअल बॉडी ऑफ द एसे जो होती है वो तो सारी पैराग्राफ्स हैं, और असल जो एसे होती है वो it is contained within the body paragraphs of the essay. So it must follow a proper structure, and we are going to practice a lot of body paragraphs writing with their structure. Made a template on that. The method of paragraph writing, what is the academic paragraph, and all these details we're going to do in lecture number 5. And then sometimes people say कि sir हमसे तो लिखा ही नहीं जाता body paragraph, आपने हमसे एक sentence लिखा तो आगे फिर चलाना नहीं आता. So we have this creative writing techniques मेरे पास, इसका proper method according to which we are going to write what is actually creative writing and how these techniques can help you in start writing. Because many of the people have this, I call them non-starters. They do not know how to move from one sentence to the other. So these techniques help you in properly starting to write. Okay, and next we have cohesion and coherence, types and exercises. ऐसे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो कोहेजन एंड कोहेरेंस है.
and then writing conclusions. Once the whole essay has been written, the introduction, then body paragraphs, and then how to write the conclusions. So if you look at it carefully, you will find out that this lecture, this study plan, basically the first two lectures are, they focus on preparing you to write an essay. आपकी critical thinking skills बनेगी, आपका brain थोड़ा open up होगा चीजों को मुख्तलिफ एंगल से देखने का, तो फिर चल के हम ऐसे लिखने के काबिल होंगे ना. So the 3, 4, 5, 6 lectures are purely technical lectures during which we talk about and I train you by different methods how to achieve the essay writing skill. Lecture number 7 is about once you have written a basic sort of essay. Now we move on to the advanced essay writing methods like the argumentative and abstract essays. So we're going to do a workshop on argumentative outline and paragraph development and the different advanced essay outline methods. Then there are different approaches used for abstract and argumentative essays. These are all advanced concepts. They are possible only when you have covered the basic concepts. As you can see, अगर आप में से कोई education के लोग हैं तो ये सारा जो study plan है, this is basically cumulative. There are two types of study plans. One is cumulative, the other is modular. Modular है कि जिसमें एक चीज पढ़ी, अगले दिन दूसरी, तीसरी, तो आपस में ताल्लुक कोई नहीं. All the modules are independent. This is cumulative. You have to understand one thing before moving on to the next one, and the next one is based on the first one. You have to have the knowledge of critical thinking. You have to know how to brainstorm and mind map before writing the correct outline, and you have to know how to write the outline before you can write the introduction, so on and so forth, like that. So one thing is clear from this, that basically what I'm going to emphasize is the teaching of skill. I am known for teaching the method rather than the content only. मैं बनी बनाई essays और बनी बनाई outlines नहीं देता students को, because I want you to be an independent learner. Learn the skill, learn the art, not the art, but the skill of essay writing. As far as the this essay study plan is in front of you, my personal skill of delivering this skill spans more than 20-25 years. I have been teaching CSS for more than 25 years, competitive examinations, not only in Pakistan, but abroad also. I have been abroad for more than 16-18 years. I returned to Pakistan only 3 years ago. But I have been in touch with CSS because online distance learning की एक बहुत बड़ी company है, चेन्नई, India की, Star Elite, जिसके साथ मेरा, I have been associated for 12 or 14 years. And in that distance learning company, there have been many students from CSS Pakistan. The main bulk was, of course, from IAS, India, and then UPSC, and from Bangladesh Civil Service, and then there is a judiciary exam in Sri Lanka, which is very much on the pattern of CSS Pakistan. So having this international experience of teaching aspirants and preparing them for competitive examinations gives me a special edge of how these skills are to be delivered. The question is for you to understand that we are here to learn the skills, the method. ये आपको बहुत कम teachers मिलेंगे जो essay writing का method सिखाएं, basically. First this, and secondly, all the types of the essays. There are 3 types of essays: expository, argumentative, and abstract. Later in the lecture today, we are going to study all these types in detail also. So don't get confused about that. Some teachers, I would say most of the teachers teach only about descriptive topics or the expository topics. They consider that these are safe, they are easy, they are one way. So students इसको आसानी से जो है वो लिख लेंगे. आसानी से लिख तो लेंगे, लेकिन FPSC में जो एनालिसिस है essay का, आपका क्या ख्याल है कि इतने थोड़े लोग क्यों पास होते हैं उसके अंदर? The reason is that FPSC ये कोई academic examination नहीं है.
बाकी टीचर्स भी आपको बताते रहे हैं इतने दिनों में, I will only be repeating the same thing, that this is not a university exam. FPSC, you are in an employment situation. You are appearing in an examination for employment. FPSC has its own requirements. FPSC को इस चीज का नहीं है कि आप academic essay को कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं. It's not the skill of that academic essay. We are looking for something more than just your writing skills. We are looking for that critical and analytical thinker. Whether you can do that critical thinking, whether you can think analytically or not. We are looking for people who are sure of their mind, who can take a stance in argumentative essay, for example, who can prove their argument in light of, in view of the opposing argument also. आगे चल के मैं बात करता हूँ उसके ऊपर. Who can do this process of thesis, antithesis, and synthesis. So we're looking for such people. Or who can deal with abstraction, like the abstract topics. In FPSC, we do the psycholinguistic analysis of the essays also. कि ये mind जो है, ये whether हमारे लिए suitable है FPSC के लिए कि नहीं है. You may be a very good writer. You may be a very good essay writer also. But you may not exhibit those skills which are required by FPSC. What are those? I'm going to show you in the how the marking criteria video soon. Any questions regarding this? मुझे काफी देर हो गई बोलते हुए. If you have any questions, please come ahead. You think, Kainat Khalid, that it's content based because if I lack information, I won't be able to write. Of course, मैंने ये तो नहीं कहा कि information नहीं होती चाहिए, लेकिन it is not just information. आप ये भी तो सीखे ना, उसका तरीका है, information को पेश करने का method है. ये बात है. How much does Zen, grammar and sentence structure matter? It matters a lot. If you cannot write, अगर आपकी language correct नहीं है, तो फिर ऐसे पढ़ने का मकसद कोई नहीं, फायदा कोई नहीं. टेकिंग नोट्स एंड यूजिंग इट. नोट्स किस चीज के? नोट्स तो आपने अपना कंटेंट के लिए नोट्स आपने जो आप पढ़ रहे हैं वो ऐसे के लिए लेने हैं. मैं तो आपको जो है वो कंटेंट नहीं दे रहा ना, मैं तो इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं दे रहा, कंटेंट से रिलेटेड. मैंने तो आपको बेसिकली बताना है कि कंटेंट को यूज कैसे करना है और कंटेंट लेना कहाँ से है. दैट इज माय टास्क. Yes, Sadia, you will learn in these 24 hours, in these 8 lectures. I have been doing this for last more than 25 years, and not just in Pakistan. I have this international experience of imparting this skill, training people in essay writing in this time. अपना वो है ना टीचिंग मेथोडोलॉजी, आखिर हम कुछ सीख के आए हुए हैं ना. हम ये बच्चों को पढ़ा के तो नहीं सीखे हुए, बकायदा एकेडमिकली डिग्रीज हैं इस चीज के ऊपर, सिखाने के ऊपर. Yes, Imran Zahoor, we may give such examples of sections where we can see such skills being exhibited. Sani, I'm going to talk about this, how it is, the other things also. Let me take some of the other questions also. Would you take the next batch too, which is going to start on 18th of July? I don't know about the 18th of July. 18th of July, Anam, which batch is that? Can you deliver deeply essay method? Kaval Kyani, what's your name? Kaval Mirani. I am known for my success in essay teaching methods. I don't like to say it myself, but if you are asking, to फिर मुझे बताना पड़ेगा. I have mastered my skill and I am proud of delivering it to the students successfully. Vocabulary matters, Fahad Mumtaz, in essay writing because, but not that high-strung sort of vocabulary. वो जो कहा जाता है ना CSS में कि आपके पास बड़ी lugubrious किस्म की वो होनी चाहिए, vocabulary होनी चाहिए, simple, clear, जो university की जो vocabulary होती है, that is enough. Don't have to go. How do we gauge where we stand in terms of our writing competency, Samra? Good question. Because हम जब आपको नोआ में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम आपसे राइटिंग टेस्ट तो नहीं ले रहे.
एक काफी सारा जो था वो प्रॉब्लम जो लैंग्वेज के बारे में स्टूडेंट्स की होती है, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज एंड ग्रामर ठीक नहीं है तो फिर राइटिंग, तो फिर कैसे आप आगे राइटिंग, तो बाद लोग इसी चक्कर में ऐसे राइटिंग में आ जाते हैं कि चलो भाई हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी. यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ग्रामर हेयर, दिस इज ऐसे टीचिंग क्लास. ऐसे बजाते खुद उसकी अपनी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, डिटेल्स हैं, इसके अंदर ग्रामर टीचिंग नहीं है. दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस separate advanced grammar and writing course in NOAA. It's a certificate course for 1 month, और उसमें I'm teaching that, and in that I'm using entirely different methods of grammar and grammar teaching for writing. इसलिए कि पाकिस्तान में जो ग्रामर जिस तरह से पढ़ाई जा रही है उसकी फेलियर आपने देख ली हुई है. You know that it does not teach English. So I'm using my different methods, the way I've been teaching. Recently we have completed 3 batches actually, with very good results. And देखिए, आप ये जो बार बार पूछ रहे हैं ना कि ये कह सकता है ना बंदा कि जो चीज बंदा पिछले 16 साल भी नहीं सीख सका, वो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1 महीने में वो कवर कर जाएगा. तो ये सारा मेथड होता है. ये कहना कि आपको इंग्लिश नहीं आती ये गलत है. आपको जिस तरह की इंग्लिश आती है उसको करेक्ट करना, वो सारा काम होता है. एंड सबसे बड़ी चीज ये कि यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, यू आर ऑल एजुकेटेड पीपल. अब आपको उस तरीके से इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं है जिस तरह हमने बचपन में आपको सिखाई थी, टेंसेस से और रूल से. नाउ यू आर ग्रोन अप. अब आपका है सिंथेटिक लर्निंग स्टाइल. अब आप एक्सपोनेंशियल नॉलेज होता है, आपको एक चीज सिखाते हैं वो 3-4 और 5 चीजें और भी आप सीखते हैं उसके साथ. इसको मेथड को यूज किया जाता है. तैमूर बेग, हाउ कैन वी ग्रास्प दिस इन दिस लिमिटेड टाइम? कौन सा लिमिटेड टाइम? आप जरा चलें तो सही ना जरा थोड़ा सा. अब मैं आपसे 3 घंटे बाद आज ही पूछता हूँ कि काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई. अभी तो मैंने सिर्फ स्टडी प्लान आपके साथ डिस्कस किया, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं की हुई चीजें. Critical thinking, Khurram, we're moving into the look at my study plan, lecture number 2. How do we decide what type of essay we should adopt? Mudassar, you will reach somewhere like lecture 5 में पहुंच के आपको समझ आनी शुरू होगी कि कौन सा essay type, मेरे type, आपके type का. And each individual is different, so fixed teacher नहीं कह सकता. अक्सर लोग मुझे पूछते हैं सर कौन सा स्टाइल, कौन सा जो है वो better है essay type. No, it's you who is going to decide, but I'm going to explain everything in detail what is. How to detect the type of essay, Faraz Khan, अभी हम करेंगे थोड़ी देर में. But critical thinking, Bushra, we have proper critical thinking models, critical thinking models for CSS essay, all these things we're going to do. फ्लॉबरी लैंग्वेज नहीं डॉक्टर हुमैरा, नो फ्लॉबरी लैंग्वेज किसी ने नहीं मांगी आपसे. व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम यू इज डायरेक्ट क्लैरिटी, नथिंग मोर देन दैट. Rubali, will you check and give feedback if we write essays and show them to you? Exactly, we're going to do that. नम्रा मुबीन, आई मस्ट, ये अब जो भी क्वेश्चन सारे एक ही तरह के आते जा रहे हैं, आई मस्ट एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं की स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी होती है, दैट दिस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. अब ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इस कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी को आगे आने का मौका मिला है. NOAA happens to be the only academy right now in Pakistan which has stepped up the quickest. बाकी academies इतनी तेजी से step up नहीं कर सकी. We have not only that all our teachers are trained in how to teach through technology now, but our examination system also, our assessment and checking system also. ये जो आप चेकिंग की बात कर रहे हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में यही क्वेश्चन है
कि हम लोग असेसमेंट कैसे होगी, हमारी चेकिंग कैसे होगी. तो ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 months we have worked very hard at NOAA at digitizing our whole system. और अब हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह का है, स्पेशली इंग्लिश. I have been supervising it myself because मैंने शुरू में जिक्र किया है कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग. I have this 10 months diploma from University of Malaya, जिसके अंदर हम इसी चीज के ऊपर करते हैं. देखें, हुआ ये है कि आप ऐसे लिखते हैं, आप अपनी जगह पे या कोई भी असाइनमेंट, पैराग्राफ, प्रेसी, कुछ भी आप लिखते हैं. यू टेक अ शॉट, यू टेक अ पिक्चर, सेंड अस इन द PDF. अब ख्याल तो ये था ना कि आमतौर पे पेपर पे आप देंगे और टीचर जो है वो रेड पेन से उसकी मार्किंग करेगा. तो पेपर जो है वो मेरे सामने आ गया पिक्चर की सूरत में, और वो रेड पेन जो था उसकी जगह ले ली है डिजिटल पेन ने. We are using digital pens now in NOAA marking में. I myself use it. और तमाम जो मार्किंग हमने करनी थी पेपर के ऊपर, अब हम आपकी पिक्चर के ऊपर उसी तरह से वो सारी मार्किंग जो है वो करते हैं, और साथ कमेंट्स और उसके ऊपर जो मार्क्स हैं और जो उसकी गलतियां हैं, वो सारी चीजें जो लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, दे आर बेनिफिटिंग अ लॉट फ्रॉम दैट. और वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे असली पेपर के ऊपर जिस तरह से टीचर ने चेकिंग करके दी है. वी आर यूजिंग इट इन NOAA. And NOAA happens to be the only place which is using this technology. So this is a great advantage that you have if you join NOAA, that you are dealing with people who understand technology. All of us, we are trained them now. तमाम जो असाइनमेंट चेकिंग है, जो पेपर हमारे मॉक्स हो रहे हैं, जून में हमारे मॉक्स हुए, उसके अंदर जो हमने मार्किंग की है वो सारी डिजिटल मार्किंग है. अभी जुलाई में जो मॉक्स हुए हैं 6th ऑनवर्ड्स, वो सारे के सारे जो एसेस आई हैं, एसे प्रेसी, सारा जो कुछ भी आया है वो सारा हम डिजिटली मार्क कर रहे हैं ऑलरेडी. एंड देन वी आर गिविंग द फीडबैक टू द स्टूडेंट्स. सो ये सारा क्वेश्चन आपका जो है नम्रा के वो व्हाट वी हैव लर्न द स्किल और नॉट, इसका मेथड ये है कि वी आर यूजिंग एसे मार्किंग रूब्रिक. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारा FPSC के मेथड पे. और उस रूब्रिक के अंदर जब आपके मार्क्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाती है कि कौन सा एरिया वीक है और कौन सा नहीं. और पेपर्स के ऊपर हम साथ मेंशन करते हैं बाकायदा कि इसका मेथड क्या है उसको इंप्रूव करने का. नम्रा मुबीन, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? मुबशिरा अकबर, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश? यू हैव टू जॉइन दैट एडवांस्ड ग्रामर एंड राइटिंग कोर्स. वो सेपरेट है, इस इन क्लासेस से अलावा है, और उसमें इट बेसिकली फोकसेस ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग. For CSS also, yes, but उसके अंदर आउटसाइडर भी होते हैं, ऐसे लोग जो CSS नहीं कर रहे लेकिन वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश राइटिंग. So there also, it's a certificate course. How much important is English writing? Kiran, Ismail, I'm not good in English. How I attempt? If you're not good in English, you must first improve. देखिए पैरेलल साइमल्टेनियसली होता है ना. साथ आप इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग का कोर्स करते हैं जिसके साथ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, और साथ साथ आप CSS पढ़ रहे हैं जिसके साथ आपको वो मेथड्स मिल रहे हैं जहां पे आपने वो राइटिंग करनी है. इस तरह से चलता है. रीडिंग बॉन इज हेल्पफुल ऑफ कोर्स. हाउ कैन वी लर्न दिस मेथड विदाउट एनी एकेडमी एंड योर लेक्चर? सुहेमा आफ्ताब, आई डोंट नो, आप बेहतर बता सकते हैं. इफ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी, अगर आपने मेरा लेक्चर भी नहीं लेना और एकेडमी भी नहीं ज्वाइन करनी और ये मेथड भी सीखना है, तो मुझे तो इसकी इक्वेशन नजर नहीं आती. You may ask somebody else maybe. Can we get our essays checked by you, Aisha Saad? I am basically heading this checking unit, and there are 6 people in it. So whatever checking you send to them for marking is going to be according to this FPSC standard. मेरा standard कोई चीज नहीं, the standard जो है वो FPSC का है. So all the checking, I supervise that also, but basic checking is done by them and then I supervise that. So आप यूं समझे कि ये मैंने चेक किया है. Yes sir, Baba Ehsan, yes, you must read newspapers and novels and books. लेकिन मैं recommend नहीं करूंगा, मुझसे ना पूछें कि कौन सी बुक पढ़ें कौन सी नहीं पढ़ें. देखिए, English is a vast subject, so maybe I will advise you a novel which you may not be interested in. And secondly, ये कि मैं novel क्यों suggest करूं? There are thousands of novels. आप pick up anything and start reading.
कोई खास नॉवल तो नहीं होगा ना, बाज लोग पूछते हैं ना सिर्फ कौन सी खास बुक है जो सीएसएस की ऐसे बेहतर तौर पे, तो कोई एक बुक नहीं हो सकती। अगर इतनी सिंपल बुक होती तो ये 10,000 लोग फेल ना होते। आप यूं समझे ना कि ये एक पीसेस को जोड़ के एक ऐसे बनाने का स्किल है बेसिकली, जो हमने सीखनी है, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है वो कंटेंट आता है उसके अंदर। अली खान, कुड यू शेयर सम पीसेस ऑफ योर ओन राइटिंग विद अस? फॉर व्हाट? मेरी राइटिंग का आपने क्या सीखना है उससे? आई हैव माई ओन रिसर्च पेपर्स, माई ओन रिसर्च आर्टिकल्स, आई हैव 2 PhDs, लेकिन मेरी जो PhDs हैं वो सारी, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। वो लिंग्विस्टिक्स है, वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। माई स्पेशलाइजेशन इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई डोंट नो व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम the linguistic aspects of artificial intelligence. So basics should be, sir, I mean that when you will start essay method, how do we write? I don't understand that. So if your lecture is disturbed due to connection, then what we could do the remedy? Anam, I don't understand. I don't know any way of that. इंग्लिश और ग्रामर तो ठीक होती, लेकिन नहीं पते अपने, गुल साहिबा आई कांट, हम नहीं पते अपने आइडिया, और एक ये भी इशू होता कि उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो सर बिल्कुल जीरो से कैसे शुरू करें? तो यही तो मैंने सिखाना है आपको, जीरो से कैसे शुरू करना है। अगर आपको पहले आता होता तो हम ना सिखाते आपको। डायग्नोस्टिक टेस्ट समरा वी डोंट हैव इन दिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट उसके लिए है एडवांस ग्रामर एंड राइटिंग। इट हैज 2 levels basically, the basic level and the advanced. तो बेसिक तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है बगैर टेस्ट के, लेकिन अगर आपने एडवांस में जाना है तो फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए। उनको एक टेस्ट, इफ दे पास ओनली देन दे कैन ज्वाइन द एडवांस लेवल। कायनात खालिद, ये तो फिर अब जब आप सीएसएस में आए हैं तो आप पढ़ेंगे ना, आपके देखे ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं। From where to get information, since I wasn't a reader and I think I like information when I saw the political topics in past papers. Definitely, you're going to study all this. देखिए ना, you are studying Pakistan studies, Pakistan affairs, current affairs, Islamiyat, and there's a lot of information in that also. So वो content फिर काम आता है essay के भी। Iman Baloch, you can ask Noah about that grammar session, कब से start हो रहा है? Abia Khan, I don't know whether I'm pronouncing your name incorrectly. I'm sorry for that. Abia Khan. One of the CSPs said that your essays are initially separated into 2 categories by looking at the paper in a glance. And if the examiner does not like the look of your paper, he will put your paper in the pile of failed students and you won't pass even if your content was good. मुझे नहीं समझ आती कि ये FPSC जैसा जिम्मेदार इदारा ये कैसे कर सकता है। I know the story inside. हाँ ये है एक बात, ये जो हजरत जो फरमा रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहे हो। जब आप ऐसे पेपर में अपीयर होते हैं तो you will see के 9 o'clock 12th of February the paper starts, and by the time the invigilator informs that half the time is over and those who want to leave the hall may leave. अब यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लाहौर में तो आधी दुनिया जो है वो उठ के कहते हैं कि पेपर छोड़ के निकल जाती है। और ये सीएसएस के एग्जाम में अक्सर होता है कि आधे नहीं तो चले कम से कम 25% लोग उठ के छोड़ के चले जाते हैं। अब ये होता है कि वो जो पेपर्स थे जो उन्होंने छोड़ा है, जो पाइल ऑफ पेपर उसके अंदर तो मौजूद है ना, तो शुरू में जब हमें पैकेट्स मिलते हैं वो 100 के जो होते हैं, तो उसमें से वो जो इनकम्प्लीट एसेज हैं उनको तो साइड पे करना होता है ना, तो दैट मे बी द लुक ऑफ इट। तो अगर वो कोई इनकम्प्लीट है तो फिर उसको चेक उसका क्या करना है, वो तो वो साइड पे चला जाता है। ये चक्कर है बेसिकली। सो अबिया खान, आई थिंक दिस इज द सिचुएशन। It's another online batch mentioned on the NOAA page. Is it not true? Anam, I don't know these things ना, मुझे टेक्निकल या ना पूछे, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ना पूछे। यू हैव द कोऑर्डिनेटर्स टू आस्क दीस थिंग्स। मुझे मेरे साथ बात करें पेपर की, मेरे साथ ऐसे की बात करें आप। मोहम्मद काशिफ शबीर,
Sir, is it compulsory to write an essay of 2500 to 3000 words? What if someone wrote 15 to 1700 words, but his points and content is very much accurate to the topic? देखिए, एक केस हमारे पास ऐसा है, who professes, जो टॉपर थे अवैध, कि he wrote about 1650 or 1700 words and still he passed or still he got good marks in the essay. लेकिन आप ये भी तो देखिए मोहम्मद काशिफ के he had the background of studying in Cambridge for 4 years और उससे पहले उनकी 2 years की एक और डिग्री है यूएसए से पॉलिसी मैनेजमेंट के ऊपर। तो बाहर जब आप पढ़ते हैं कैम्ब्रिज में तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल कितना जबरदस्त बन गया होता है आपका। तो अगर आपकी आर्गुमेंट स्ट्रांग है तो आप 2000 वर्ड्स के अंदर अगर आप प्रूव कर रहे हैं अपनी बात, समझ आ रही है ना, फिर तो केस फाइट किया जा सकता है। और अगर लैंग्वेज भी नहीं ठीक और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल भी ठीक नहीं है और फिर कहना है कि मैंने लिखना भी थोड़ा है, तो फिर बेटा आप मुझसे ना वैलिडेट करवाएं। बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगी कि मैं शॉर्टकट्स वाला बंदा नहीं हूं, मुझे शॉर्टकट की ना समझ आती है, ना ही मैंने लाइफ में कभी इसको सक्सेसफुल होते देखे। एस्टेब्लिशमेंट मारूफ, मुझे ये नहीं समझ आती, अक्सर लोग पूछते हैं सर कैन वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन दी एसे। भाई आप एफपीएससी का इम्तिहान दे रहे हैं, आप अखबार में तो नहीं लिख रहे, आप क्यों क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को? या ठीक है कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं जो हिस्ट्री बुक्स में है आपकी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि अब आप अपना सारा गुस्सा जो है गवर्नमेंट का वो ऐसे के अंदर निकाल आए। Why is the examiner bound to read all that? तो be logical, किसी भी सूरत में you have to be logical. Okay, I think it's time to move on to the next part. I will keep showing you this was your introduction to essay paper, and now I am going to move on to one of the essay papers, going to show you that. And first of all, the syllabus, and then one of the papers. So we are moving on to business once again. Okay, so before moving on to the CSS essay paper, first of all ये तो देख लें कि syllabus क्या है। आप अपीयर होने लगे हैं किसी एग्जाम में, obviously this is the FPSC syllabus. 2016, ठीक है। अब आप ये ना समझे कि ये आउटडेटेड है या पुराना है, नो, 2016 was the last revision of the CSS syllabus. A lot of things changed in that. Why I'm emphasizing this fact is that we will be talking mostly about essay papers from 2016 onwards, not before that. उसकी वजह ये कि syllabus different था, requirements different थी, और method जो था वो different था, style different था 2016 onwards. So focus only on 2016. So we look at the syllabus. Here you are with the essay paper of 100 marks. 100 marks. Let's look at the syllabus. Essay ka syllabus. Here is this. लेकिन आमतौर पे 1 ही आ रहा है और वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स जो है वो दी जाती है हमें। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट, अब सिलेबस कहता क्या है, एफपीएससी की डिमांड क्या है। I have brought you here for this purpose. The FPSC demands that you must reflect comprehensive and research-based knowledge. What does it mean on a selected topic?
कि आपने जो लिखना है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ये नहीं कि सरसरी बात करके बस उसको छोड़ के निकल गए। एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज, कि आप जो नॉलेज पेश कर रहे हैं, जो कंटेंट पेश कर रहे हैं, जो दे रहे हैं उसके अंदर, ऐसे के अंदर, वेदर इट इज रिसर्च बेस्ड, या कि ये जो अखबार में आ गया कहीं पे किसी या शाम को जो टीवी चैनल के ऊपर जो डिस्कशंस चल रही होती हैं वहां से कोई इंफॉर्मेशन ले ली, या किसी की गुफ्तगू में से आपने कोई बात उठा ली, तो क्या आर यू मेंशनिंग दोज थिंग्स ओनली, और इज योर नॉलेज प्रॉपरली बेस्ड ऑन रिसर्च? जाहिर है अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के नॉलेज लेते हैं तो दैट हेल्प्स, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली इन सीएसएसएससी ऑन अ सिलेक्टेड टॉपिक। अच्छा जी, और क्या मांगता है? एफपीएससी सेज दैट कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन। What is articulation? Articulation means that can you articulate your what you want to say, your opinion? क्या आपको प्रॉपर बात करनी आती भी है कि नहीं? Can you say it in proper language, in a proper manner, so that the other person could understand that? क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है ना अक्सर के, जैसे सवाल क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्वेश्चन की ही समझ नहीं आती क्वेश्चन क्या है, इट इज नॉट प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड। Then there is expression. So we have the candidate's articulation, expression, it means language, and the technical treatment of the style of English essay writing will be examined. So basically essay writing में वो check क्या कर रहे हैं आपका? वो check कर रहे हैं articulation means your content, expression means language, and technical treatment of the style of English essay writing, structure. ऐसे इंग्लिश ऐसे राइटिंग के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आर्गुमेंटेटिव का और है, एक्सपोजिटरी का और है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का और स्टाइल। आई एम गोइंग टू ट्रेन यू इन ऑल दीज, और whether you understand these different styles or not, this is what is being tested. अब प्रॉब्लम ये हुई है कि I can't understand that what has written at the top on paper. कहाँ पे top on paper? English ऐसे लिखा हुआ। अच्छा, so this is the syllabus for English essay CSS, और आगे इसकी एक्सप्लेन, nothing. Are there any books suggested for writing CSS essay? Nothing. I'm scrolling. Nothing. अब अजीब बात जो मुझे लगती है ऐसे के बारे में, सिलेबस के बारे में, हर दूसरे सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखें, ये देखें, ये देखें, हर सिलेबस जो है वो भरा होगा इस तरह से डिटेल से, लेकिन जो ऐसे का पेपर है उसके ऊपर आपको you get nothing. FPSC is quiet. It doesn't give any more details on that. So ये जो blank है ये वाला सारा, यहाँ पे फिर लोगों ने अपनी मर्जी से बहुत कुछ भर लिया हुआ है। ये जितनी आप मिथ्स सुनते हैं ऐसे के बारे में, ये जितनी आप बातें सुनते हैं ऐसे के बारे में, ये सारा कुछ इसी वजह से है कि वो ये ब्लैंक जो जगह थी इसके अंदर लोगों ने इतना कुछ लिख लिया हुआ है, इतना कुछ बना लिया हुआ है। Isn't it so? आपने जब ये स्टार्ट किया है ये वाला CSS essay, तो सुन रहे हैं ना कि ये ड्यूरेशन 8 days 24 hours मीन डेली 3 hours, मतलब one lecture is for 3 hours and 8 into 24, यार क्या बात है। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जरा मुझे मेरे क्वेश्चन का भी जवाब दें। आई वुड लाइक टू सी कि कोई लोग जाग भी रहे हैं या कि सिर्फ पैसिव लिसनिंग के अंदर आप लगे हुए हैं। What myths have you heard about the CSS essay? जब से आपने नाम लेना शुरू किया कि ये हम CSS करने लगे हैं, आपने सुना होगा लोग बेशुमार चीजें आपके कानों में जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। Are there? है ऐसा कि नहीं है?
it fails you the most, yes, or difficult to pass, critical analysis based है, writing गंदी है तो fail कर देते हैं. If you're not a reader, you will fail. Many people can't clear. Give much more time. Have to read. हाँ, राना मंसूरी अच्छी बात है. Checking tough grammar has happened. Difficult pass. सारा कुछ. Luck based, Nafisa, which I can never believe. Luck, because I do not believe in luck myself personally. So मुझे इसकी समझ ही नहीं आती कि ये luck क्या होती है. हाँ, ये है कि आपने शुरू में शॉर्टकट लगाया हुआ था कि हाँ जी मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव करनी है, यानी 1/3 ऑफ द चॉइस, और उस डिस्क्रिप्टिव में भी मैंने ये डेमोक्रेसी और एजुकेशन और वुमेन्स राइट्स पे करना है. सो आपने शुरू में, और वो टॉपिक्स नहीं आए तो आप कहेंगे जी लक ने काम नहीं किया. नहीं, आपके शॉर्टकट ने काम नहीं किया. Mariam Afzal, this I agree with you that your CSS depends on one paper, that is essay. So ये आमतौर पे मैं अपना लेक्चर ये वाला इसी से शुरू किया करता हूँ कि CSS पूरा CSS एक तरफ और essay एक तरफ. और I take a lot of pride in teaching this paper actually. I like it so much that at least students का attention तो होगी ना, because self motivated लोग मिलेंगे और उनको पता होगा कि essay को जो है वो ध्यान से पढ़ना है. People say, Mubashir Akbar, that it's impossible to pass essay paper. Why impossible to pass? आपने आपसे नहीं पास हुआ तो बाकी को भी नहीं पास हो सकता. If you write against the point of view examiner, Zirba Yusuf, ये purely जहालत वाला point of view है. ये जो है ना, if you write against the point of view of examiner, examiner का कोई point of view नहीं होता. ये मैं पहले शुरू में clear करना चाह रहा हूँ आपको. Argumentative essay में आपसे पूछे जाते हैं दोनों points of view. Examiner कह रहा है कि आप yes या no में करें. हमारे लोग कहते हैं कि जी व्यू एग्जामिनर साहब के वो बुरा मना जाएंगे, ये है वो है. ह्यूज वोकैबुलरी नहीं, आया गुल नहीं चाहिए इसके लिए. नहीं, आलिया इस्माइल, योर वोकैबुलरी मस्ट बी बेस्ट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. मरियम खान, 96% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश ऐसे, 98% पीपल फेल इन दैट. Exactly, Tahir Aziz, very good point. Sir, the first thing is to suppress your own negative thoughts. Quotation that references are must, yes. अब ये देख के ना सारा, तो मुझे पता है क्या, मुझे एक कहावत याद आ रही है कि यस मरियम खान, कंप्लीट सीएसएस ऐसे की ना समझ बहुत थोड़े लोगों को है. वो ये मैं मिसाल अक्सर जो है वो पब्लिक क्लास जो होती है उसके अंदर सुनाया करता हूँ कि ब्लाइंड पीपल, नाबीना लोगों की एक लाइन जा रही थी ना, लाइन तो नहीं थी, हजूम जा रहा था. लाइन कैसे बढ़ाते बेचारे. तो सामने एक हाथी आ गया, तो अब उनको समझना है कि किसी ने कहा वो ये हाथी है. अब वो हाथ लगा लगा के देखने लगे. किसी के हाथ में उसका कान आया तो उसने कहा हाथी तो बड़ा पतला सा होता है, नरम सा होता है. किसी के हाथ में उसकी सूंड आई तो उसने कहा ये नरम सा होता है, ये गोल सा होता है, पतला सा है. किसी के हाथ में उसका सींग आया तो उसने वो सॉरी जो था उसका वो टस्क जो है, दांत जो है वो आया, किसी ने कहा जी बड़ा सख्त होता है हाथी. किसी के हाथ में उसकी टांग आई, किसी ने वो पेट को हाथ लगाया तो उसने कहा दीवार की तरह होता है हाथी. और किसी के हाथ में उसकी दुम आई तो उसने दुम की डिस्क्रिप्शन जो थी वो कर दी. सीएसएस ऐसे मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल, मुझे हमेशा ये मिसाल याद आती है कि इसके ऊपर पब्लिक का ओपिनियन जिसको जो समझ आती है वो सीएसएस ऐसे को जो है वो बना देता है. ये अजीबोगरीब किस्म का लोगों ने इसके बारे में जो है वो मिथ्स बनाई हुई है, और बस ये है बस वो है. अगर उनसे पास नहीं हुआ तो वो समझते हैं कि बस इसके अंदर लक लगती है, ये लगता है वो लगता है. Whereas कहाँ पे कौन किसने कहा है? अब उसने कुछ कहा है पीएससी में कि मुझे वोकैबुलरी चाहिए बड़ी मुश्किल किस्म की? उसने कुछ कहा है कि लक या कोई इस किस्म का? जो कुछ उन्होंने दिया है वो बड़ा सिंपल सा है, और एग्जामिनर चेक्स वेरियस कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ कैंडिडेट विद सिंपल. हाँ सानिया शौकत, यही बात ना. व्हाट एडवाइस विल यू गिव एट स्टेज फॉर एसेस? एग्जामिनर चेक्स वेरियस कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ कैंडिडेट
within a single paper. We are checking the competency of your critical thinking, your organization, your structure, your language, clarity, all these things, and argumentation method, everything we are checking. तो ये है जो बेसिकली सारी स्किल्स हो रही हैं. तो इसीलिए मेरा स्टडी प्लान आप देखेंगे तो बेस्ड है स्किल्स सीखने पे, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो टेस्ट हो रही हैं. मैंने शुरू में आपसे कहा कि being an examiner gives me an edge over others to understand why people fail, and then to devise a teaching methodology according to which students could be trained not to fail in these areas. ये basic वो areas हैं जो CSS. Okay. We have seen the syllabus. Okay. हाँ मिसबा ये attitude रखें that believe CSS is doable. Once you are in my hands, and most of the other students जो मेरे students हैं, आप उनसे अगर पूछेंगे, they will tell you the same thing, that at least they have this confidence that we can do it. And how can we do it? Because हम इसको बनाना सीख रहे हैं. हम ready-made essays देख देख के, देखें ये अपने आप को बेवकूफ बनाना है. मैं देखूं किसी शख्स को लकड़ी का काम करते हुए बड़ा खूबसूरत वो टेबल के ऊपर जो है वो कढ़ाई कर रहा है, मैं उसको खड़ा होकर 2 घंटे 3 घंटे देखता रहूं, जितना मर्जी देखता हूं, चाहे सारी जिंदगी देखता रहूं. I cannot do that unless I have that chisel and that hammer in my hand and the wood in front of me. And then I need a mentor who could actually teach me that skill, how to do that. It's only, ye yaad rakho, you people are 220 people here. Remember one thing from me. Passing CSS is here in your fingers. In your fingers, not in mine. It's in your fingers here. आपके फिंगर्स ऐसे लिखेंगी तो लिखेंगी और वो पास होगी. किसी दूसरे शख्स की, चाहे मैं आपको गोल्डन ऐसे 100 मार्क्स वाली दिखा दूं, वो आपको पास नहीं करवा सकता. डू यू अंडरस्टैंड माय मैसेज? मुझे जरा बताएं जरा प्लीज. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? It's you who writes, who puts the brain to the paper, who actually succeeds. ये तमाम लोग जो फेलियर वाले हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों की ऐसे देख के आए थे कि हम भी उनकी तरह देख के लिख के तो हम कर लेंगे. It is you who write. It's in your fingers. Have this confidence. Have this confidence. No? Self done is well done. Have this confidence that you are going to write that good essay. Have this confidence on the teacher also, that he is going to train us in all that. And then there is a lot of effort, and there is a lot of, I would say, guided effort that you are going to get from Noah. तो फिर जो है वो चलता है उसको. So that is why thank you very much, Kamal Mirani, for this. So let's see how you are going to do it. हमने वो देख लिया कि सिलेबस क्या कहता है, हम देखते हैं कि पेपर क्या कहता है, और उसके बाद चलते हैं कि हमने इसको करना किस तरह से. जी हाँ, ताइफ अली खान, जस्ट टेक आइडियाज फ्रॉम सराउंडिंग और अदर ऐसे. चलो ठीक है, जो ऐसे में आइडिया यूज हो गया होता है वो आपके काम का नहीं होता. आप फ्रेश जाए ना, सोर्स पे जाए. मैं करूंगा, वो भी करूंगा, डोंट वरी, विल गो इनटू दैट साइड. Osama, I will deal with the argumentative essay later on. Let's do another thing, and that is going to your अब सिलेबस हमने देख लिया है. लेट्स सी कि इस सिलेबस के मुताबिक पेपर जब हम बनाते हैं तो पेपर क्या, उसके अंदर क्या मांगा जाता है. द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस को बहुत कम कभी ध्यान देते हैं. आमतौर पे जब पेपर आता है तो दुनिया किस तरफ दौड़ती है? दुनिया दौड़ती है पेपर्स की तरफ. कोई सा भी पेपर CSS essay का आपने पहले देखे होंगे यकीनन, लेकिन आपने हमेशा ध्यान दिया टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4. Did you ever notice there is something written here also? The instructions. Make an outline.
first of all, and write a comprehensive essay. दो चीजें हैं. These are two separate things. Clearly written. अब हमारे स्टूडेंट्स अगर आउटलाइन लिखें ही ना और कहें कि जी मैं फेल हो गया हूं, या वो कहें कि जी आउटलाइन हम बाद में लिखेंगे, पहले ऐसे लिख लें क्योंकि हमारे टीचर ने हमें सिखाया था, तो देन जाहिर है जब वो कह रहा है कि आउटलाइन लिख के ऐसे लिखे मुझे दिखाएं, तो फिर आप पहले ऐसे लिख लें बाद में आउटलाइन करें, तो फिर टीचर को भी तो नजर आ रहा है ना, एग्जामिनर को भी नजर आ रहा है कि आपने मेथड फॉलो ही नहीं किया. कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे वो 2500. This word limit makes it. I can't see your messages now. When I'm sharing screen, I can't see your messages. अच्छा, ये जो word limit है, इससे पता चलता है कि ये अपने पास, it is a thesis essay. Thesis essay, THESIS. आमतौर पे आप जब सर्च करते हैं ना इंटरनेट के ऊपर ऐसे राइटिंग और ये वो सब कुछ, जो कुछ रूल्स आपको मिलते हैं, वो आपको मिल रहे होते हैं सारे यूनिवर्सिटी एसे के, कॉलेज एसे के, या स्कूल एसेस के. थीसिस एसे इज अ डिफरेंट थिंग. एसे की लेंथ से इसकी टाइप जो है वो डिसाइड होती है कि ये थीसिस एसे है. बेसिकली जॉनरे कह लें आप, जो इसकी टाइप है. था और अब पेपर में वो क्या मांग रहे हैं, पेपर में वो मांग रहे हैं मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस. डिस्कोर्सेस मींस राइटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग. हम इंग्लिश में इसको राइटिंग को या टेक्स्ट को डिस्कोर्स कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल कौन कौन सा राइटिंग स्टाइल चाहिए? एक्सपोजिशन. आपको हमने देखना है कि आपको ये आता है राइटिंग स्टाइल कि नहीं. आर्गुमेंटेशन, ये ऐसे के स्टाइल्स हैं एक्चुअली. डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, whether you know all this. Okay. Credit will be given for organization. Yani structure, relevance, content, clarity, language. Okay. So अब उसने सिलेबस दिया था और अब उस सिलेबस के ऊपर जो उन्होंने पेपर बनाया है, उस पेपर में मांग रहे हैं दोबारा वही चीजें कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे किस चीज के? ऑर्गेनाइजेशन के. क्या आपका स्ट्रक्चर ठीक है, रेलिवेंस, क्या आप रेलिवेंट भी हैं कि नहीं, और क्लैरिटी, आपकी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं, और क्या आपने, हम आपको ऐसे देते हैं एक्सपोजिशन का, तो क्या आपने एक्सपोजिशन के स्टाइल से उसको लिखा? वी गिव यू एन essay according to the argumentative, we give you an argumentative essay. Have you dealt with it according to the argumentation style? Have you used the descriptive method when there is a descriptive essay, and narrative essay, narration when there is a narrative essay? So अब ये for example यहाँ पे अब आ गया है higher education in Pakistan, topic number 2, ills and remedies. अब ये expository topic है. अब अगर बंदा इसके ऊपर argumentation लिख देगा, आर्गुमेंटेटिव स्टाइल्स को उसको लिख दे, तो फिर तो फेलियर जाहिर है. क्या आपने पहचाना भी है कि नहीं कि कौन कौन सी टाइप है एसे की, और क्या आपने टॉपिक जिस तरह का टॉपिक था क्या उसके मुताबिक लिखा भी है कि नहीं, so on and so forth. So this is your paper. ये सुमेका नूर सर, ये सब एक में नहीं लिख सकते. जब वो कह जो रहा है कि अलग अलग है, आपने पहचाना भी है ऐसे को कि नहीं कि ये कौन सी टाइप है, तो फिर अलग अलग लिखेंगे ना. जब वो कह जो रहा है कि आपने पहचाना है कि नहीं, फिर अब जबरदस्ती सारे में एक तरह का लिखना है. रेलिवेंस का आपने क्या बताया? रेलिवेंस यानी टॉपिक रेलिवेंट है कि नहीं शमशाद. हाउ कैन वी एनालाइज द टॉपिक टाइप ऑफ द एसे? अभी हम करते हैं उसको हिबा.
We're going to do that. You will become master in this. You will become very good at recognizing within very short time. Types of essays briefly, Umar. My second part of my lecture today deals especially with types of essays. How much practice will be included in this session? In this session यानी आज का जो lecture है, जो आज का, आज ज़ाहिर है practice नहीं, अभी तो आपको मैंने अपना सारा study plan आज का दिखा दिया हुआ है. Okay. Is there a preferred style? Preferred style समरा कोई नहीं होता, और जो है Dr. Ali Heather, I'm going to explain all types in the second part of the lecture today. First one दोबारा समझाएं क्या चीज, आलिया इस्माइल. फर्स्ट वन क्या चीज? मैं इस सारे को दोबारा बोलता हूँ. अभी तो मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ ना. मैं थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ विद फर्दर नोट्स और डिटेल से जो है वो इसकी. लेट मी गो थ्रू माय लेक्चर. आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं. होल्ड योर क्वेश्चंस प्लीज. आई वांट टू मेंशन समथिंग एल्स. वी विल गो ऑन अ ब्रेक फ्रॉम 7:20 to 7:40. This is essay in front of you. और मैंने जिक्र किया कि we are going to have 8 lectures in 24 hours. नोआ में हमने एक और जो स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है वो भी ट्रेनिंग है ना. बेसिकली ये आप इस चीज को समझ रहे हैं कि यू आर नॉट इन अ यूनिवर्सिटी. दिस इज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग यू फॉर रिक्रूटमेंट. एफपीएससी की जो रिक्रूटमेंट है. व्हाट आई हैव डन इज कि ये जब हम सारा पढ़ा लेते थे, ये सारी जो थियरी और इसकी जो प्रैक्टिस है वो सारी, we have started making English study groups within each batch. I'm doing it in my classes at least. English study group basically क्या होता है? ESG. It consists of 6 to 8 students. आपका बैच जितने भी लोगों का है, कोई 10-11 ESG जो है वो बन जाते हैं एक. क्योंकि होता यह है कि जब मैंने फॉर एग्जांपल आउटलाइन राइटिंग सिखाई है, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई है और पैराग्राफ राइटिंग या इंट्रोडक्शन कोई भी चीज, तो अब उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है. अब 70-80 लोगों में आप उस वक्त बार बार मुझे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हियर इज द सॉल्यूशन फॉर दैट. तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पैराग्राफ राइटिंग आपको सिखाऊं और 80 पैराग्राफ्स एक 3 आवर्स के अंदर मैं उसको चेक भी कर सकूं. So the method we have devised is that we create peer learning groups, 6 to 8 people in one group. हर शख्स की अपनी weaknesses और अपनी strengths होती हैं. बाहर यूनिवर्सिटीज में हम ये मेथड जो है अक्सर यूज करते हैं. और within these groups then I keep on issuing tasks. हर लेक्चर के साथ 2-2 tasks होते हैं. ये 6 to 8 पीपल का ग्रुप जो है ये अपनी जूम मीटिंग करते हैं और उसमें फिर उस टास्क को फुलफिल करना. किसी को स्ट्रेंथ है, किसी को वीकनेस है, किसी को बेहतर समझ आई है, किसी को बिल्कुल समझ नहीं आई, वो फिर आपस में मिलना पीयर्स का और आपस में पीयर लर्निंग जो है. और कुछ ये कि एक एज ग्रुप के होते हैं तो फिर जरा समझते जल्दी हैं और लर्निंग जरा फास्ट होती है. देन हर ESG के अंदर एक लीडर है और वो लीडर जो है उनके फिर ESG लीडर्स 10, 11, 12 उनका एक अलग ग्रुप बना लेते हैं. एंड आई बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप देन, एंड देन आई डिसेमिनेट द टास्क टू द ग्रुप ओनली, दैट लीडर्स ओनली, और वो फिर अपने अपने ग्रुप के अंदर उसको टास्क को जो है वो करवाते हैं. फिर उसके अंदर फिर हमने, अब ये बेसिकली आपकी ट्रेनिंग है. देखें पूरे CSS ना, CSS सिर्फ ये नहीं है कि आप एक बंद कमरे में बैठ के अपनी बुक्स लेके, नोट्स लेके, अपनी इंटरनेट लेके तो आप बस बैठ के पढ़ते रहेंगे और दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. इट्स अ टेस्ट ऑफ द होल पर्सनालिटी एक्चुअली. सो ये एक मेथड था पर्सनालिटी ग्रूमिंग का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो एसे में बड़ी वाज़ेह नजर आती है. ये वाली स्किल बेसिकली, हाउ गुड आर योर ग्रुप डायनामिक स्किल्स, हाउ गुड आर यू इन एट कम्युनिकेशन. सो ये सारी ट्रेनिंग करनी, वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, कि हमने स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ नर्ड्स या वो बुक वर्म्स नहीं बनाना, हमने उनको पूरा ट्रेन करना है ऑफिसर बनने के लिए. बिकॉज आफ्टर दिस एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू फेस the group tasks and the psychological test and then the viva also, all these things.
तो ये वो स्किल्स हैं जो बेसिकली उसके अंदर काम आती है। तो फिर उसके लिए सेपरेट जो ट्रेन करना है एग्जाम के बाद, तो क्यों ना मैं अभी से शुरू करूं और इसके अंदर मैं आपको उन स्किल्स की भी प्रैक्टिस कर लूं, सो दैट अभी से आपकी वो सारी लर्निंग जो है उसके अंदर और ज्यादा माइन्यूट लेवल पे लर्निंग होती है। आप ऐसे पूरी ऐसे की बात कर रहे हैं, मैं एक एक सेंटेंस की जिम्मेदारी लिया करता हूं हमेशा, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, ट्रेन यू इन राइटिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस इन द एसे। हाउ वी हैव प्रॉपर मेथड्स फॉर दैट। And I must tell you that these methods, मैं किसी भी चीज का, since I'm a scientist, I would say linguist हूँ, so I never talk without evidence and without proof for anything. These are tested and tried methods that I have tried on thousands of students in different cultures and different countries and CSS and everything. So ये एक method ऐसा जबरदस्त method है जिसके जरिए students की ये ज्यादातर remarks हैं कि learning बहुत fast है, बिकॉज मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया और उसकी स्किल की प्रैक्टिस ना हो सकी तो देन इट इज यूजलेस। उसकी प्रैक्टिस फिर जो है उन ग्रुप्स के अंदर हो रही है, एंड देन देयर इज अ लीडर्स का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है, और लीडर्स जो है दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी मंथ। सो एवरी पर्सन इन द ग्रुप गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी द लीडर, और सबकी वो ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर उसके अंदर होती है। सो दिस इज वन मेथड विच वी आर यूजिंग। ये तो है जब क्लासेस चल रही हैं, तो दिस इज हाउ वी हैव 36 आवर्स ऑफ एक्टिविटीज आपके लिए साथ, जिसको मैं मॉनिटर करता हूँ पर्सनली, सुपरवाइज करता हूँ ऑल द डे। आई एम अ फुल टाइम टीचर विद नोआ, इंग्लिश टीचर, एंड बाकी दिन मैं सारा टाइम स्टूडेंट्स को एंगेज किया हुआ है। आई एम राइट नाउ आई एम टेकिंग अराउंड 16 क्लासेस ऑफ इंग्लिश एसे एंड प्रेसी, और हर एक के अंदर ये चीज है, एक एक बैच के अंदर 10-10 12-12 ये चीज है, उन पूरों का सिस्टम उनको मॉनिटर करना, टास्क देने, कहाँ पे टास्क में प्रॉब्लम है उनको एक्सप्लेन करना। आई कीप डूइंग इट all the day in my separate time also. Along with this, we have the essay discussion forum, Telegram के ऊपर, और Telegram में फिर जो है वो ग्रुप इस तरह से है, essay discussion forum, जिसमें जब आप आउटलाइन राइटिंग सीख लेंगे और स्किल आपकी ये बन जाएगी, देन हम सारे जो बैचेस सीखते जाते हैं उनको फिर मैं ऐसे डिस्कशन फोरम के अंदर ऐड करता हूँ, जहां पे वो आउटलाइंस लिखते हैं और फिर एक दूसरे की आउटलाइंस को डिस्कस करते हैं। सो इस तरह से ऐसे डिस्कशन, ऐसे रिसोर्स सेंटर है जहां से हम कंटेंट, ये जो आप बार बार पूछ रहे हैं ना, कंटेंट कहाँ से आएगा, कंटेंट कहाँ से आएगा, सो आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट आल्सो। We have the essay resource center where you get the all the figures, statistics, latest everything. Students upload that, and the research articles related to material for the essay writing and things like that, everything. So एक पूरा एक ecosystem है teaching का. So when I'm sitting with you like this, these are just maybe आपको लग रहा है कि contact hours थोड़े हैं, लेकिन actually इसके आसपास बहुत सी learning हो रही है, and students are quite busy and they are enjoying it a lot. बहुत लोग समझते हैं, मुझे आज पहले एक सेशन हो रहा था 2:30 से 5:30, तो लोग पूछ रहे थे कि सर ये बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो जाता? सीएसएस कर रहे हैं आपको ये कोई मैट्रिक भी, एफएससी का एग्जाम तो नहीं है कि साइड पे साथ क्रिकेट मैच भी खेलते रहेंगे और साथ जाके एग्जाम भी दे आएंगे थोड़ी देर बाद, नॉट लाइक दैट। सो आई होप दिस इज यू आर already appreciate this strategy and you will be able to understand this and you'll be able to utilize this also. We'll go on a break now for 20 minutes and we'll come back to look at the essay marking criteria. उसके बाद फिर मैं types of writing और essay types जो है वो सारा कुछ cover करूँगा. Okay? Thank you very much for your attention. Relax करें for 20 minutes and we'll come back by 7:45. Yes, you're dealing with an expert. Yes. Okay. I know my job. Don't worry about that. Yes, Anam, I'm trying to answer most of the students. – 7:25 to 7:45. See you after the break then. Thank you. Seems like you people got your break. Those who want to go off in a mask, they are allowed to go.
But those अभी जहाँ कुछ जगहों पे नमाज का टाइम नहीं हुआ, अजान नहीं हुई, they can still stay in the class with me. I'd be here for 10 more minutes. I'll guide you through the basic process of admission and everything, like I do always. And then I'll make sure that I give you 5 to 10 minutes for your namaz. Those who want to go offer namaz, they are free to. ठीक है? Am I audible to you all? Perfect. चलिए, perfect. Okay, fine. I got to know that I'm quite audible to you. Give me a moment. अजान खत्म होती है तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन दूंगी so that you can, you know, copy down the content. You can take the picture of whatever is necessary, जो भी आपको लगता है important है आप उसे admission process is the most important one. I'll try to share the picture like I did earlier. मसला ये कि जब मैं पिक्चर शेयर करती हूँ ना तो आई एम अनेबल टू I hope you people are able to see my screen. जी, the classes would be online throughout the session. And जब academy open होगी, we'll take other sessions. ठीक है? We won't be transferring these sessions to our campus. अच्छा जी, this is the fee submission procedure. Better take picture everyone. पिक्चर ले लो आप साथ साथ so that आपको पता हो कि करना क्या है. What you are supposed to do is today was the admission day and fee submission day. You people still have time till tomorrow's class. Before that, you have to submit your dues on any of these bank details provided. Whatever slip you will get if you submit it via ATM, you will get the receipt. If you submit it directly into a bank account, like going there physically, you will get the bank deposit slip. And if you will submit it online, you will get the transaction screenshot. जो भी आपको मिलता है इन तीनों में, you will send it on the number provided right here. यहाँ पे आप नंबर देख लो, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ये देखिएगा यहाँ पे ये नंबर जो प्रोवाइड किया गया है, इस नंबर पे आप लोग अपनी ये डिटेल्स सेंड कर देंगे along with the fee slip and everything. ठीक है? Now I'll try to entertain your questions. Unfortunately, I'm unable to. Okay, fine, good enough. I have started seeing your messages. Okay, we have many campuses. We have 2 campuses in Rawalpindi. Campus 1 is in Rawalpindi Westridge and number 2 is in Rahmanabad Murray Road. We have 3 campuses in Islamabad in G10-2, G10-1. 2 of the campuses. One is on Main Sawa Road and the other one is near High Court, and the third one is in G10-4. And one campus we have in Lahore as well. ये आपने आई होप पिक्चर ले लिया सबने बेटे. You have to submit your dues before tomorrow's class or else your admission would not be considered, of course, and then you might not be able to attend classes any further. बेटे आप कराची में हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, इनफैक्ट आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, you can take these online classes. अच्छा, subject selection for everyone was done the other day. If people were left, अब उनका ये है कि once they submit their fee,
I'll request them for 1 week. 1 week के बाद I'll make sure that they get to talk to their mentors और उनकी subject selection करा दूँ. Okay, there would be around 130 to 150 total lectures in 4 to 4.5 months, and 6 days a week आपका lecture हुआ करेगा. Friday would be a day off. Every day you will have one lecture which is of 3 hours. Over the weekend, when I say over the weekend, I mean both Saturday and Sunday you might have more than 2 classes. यानी 6 से 9 घंटे की class भी हो सकती है. ठीक है? You should have this thing in your mind. So it's a hard journey. It's not that easy. अब थोड़ा सा ना, I would like not to talk about fees and fee funding and everything because I repeated it several times. Let's talk about this thing. You people are here because you people have made your mind that we are going to go for CSS. You are going to sit for a competitive exam. If you have made your mind, it means that you have the ability to get what you really want to get. तो सबसे पहले जो आपने करना है वो करना है अपने ऊपर यकीन. You have to believe in yourself that I can do it. If I have decided it, I have taken admission in any academy, any institution for preparation. I am going to go for it and I'm going to qualify. तो पहला तो जैसे मुझे एक सर आतिफ की बात बहुत अच्छी लगती है अपने सेमिनार में, हमेशा वो कहते हैं कि there are certain friends who would always be against you when you would pursue the stream of CSE. They'd come and say, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हारे पास इतना टाइम है ही नहीं, इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है, इसमें तो ये है वो. So what they are trying to do is that they are going to lower your morale. आपका मोराल नीचे होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग you should be doing after taking admission in any institution for preparation, you're going to get rid of negative people around. Those people who keep on telling you that you are not worthy of anything or you are not capable of doing anything. उसके बाद CSS कोई इतना मुश्किल काम नहीं. To be very honest, CSS बहुत easy है, ये achievable goal है. अगर ये achievable नहीं होता, we won't be producing 60 to 65 officers every year अपने institute, which indicates, अब देखो हमारे institute में only teachers can guide you, can give you the classes. मेहनत आपकी अपनी है. You do it, you do all the hard work and you would be able to get through. It's not that hard. तो ये मत सोचना कि यार पता नहीं मैं एडमिशन लूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा. If you come with this mindset, if you come that someone has asked you to go for CSS, believe you me, do not go. Do not go for it. Go for whatever you want to. जी मैं सनिया शौकत, I am all ears. आप बताइएगा. आप जिस मर्जी बैच में एडमिशन ले, हमारा नो प्रॉब्लम एट ऑल. We won't be rescheduling Dr. Fiza, but those who will, submit the dues, I'll make sure that they get to talk to their mentors after a week or so. अच्छा राना, हम बिल्कुल सर राना जी, हम बिल्कुल यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, बट अगर आपका एक आध सब्जेक्ट ऑफर नहीं होगा, there won't be any deduction in fee because it's already a discounted batch. शहबाज शमशेद, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिन्होंने फी करा दी है, डिस्कशन उनकी बाद में होंगी. आई डू नॉट वांट माय रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स टू कम अप विद एनी न्यू टास्क फॉर मी. ठीक है, थोड़ा सा आप लोग हौसला रखिए. आई गेट बैक टू यू ऑन माय ओन. रिलैक्स रहिए. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू गेट बैक टू यू राइट आफ्टर यू हैव सबमिटेड द फी. अक्सर ऐसा होता है 5 मिनट में आप फी सबमिट कराते हैं, 5 मिनट बाद आप तकरीबन जितने नंबर्स आपके पास होते हैं आप उस सब पे कॉल करके पूछते हैं कि जी हमारी फीस सबमिट हुई है नहीं, हमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है नहीं. इट डजंट वर्क दैट. आपके पार्ट पे इट्स जस्ट वन टास्क दैट यू टेक द पिक्चर एंड यू सेंड इट टू अस, बट हमारे पार्ट पे वी गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन वन. सो रिस्पॉन्डिंग टू देम, पुटिंग देम इन द ग्रुप्स और एनीथिंग लाइक दैट, इट टेक्स टाइम. ठीक है, बी पेशेंट. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज मेंशन यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स एट लीस्ट. Mariam Afzal, we are not offering individual subjects either. Haseeb Ehsan, मैं तो I'm the proponent of the concept कि इंसान अपना motivator हो. You are the only one who can motivate us.
You are your own savior, क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता. This world is full of those people. There is this very beautiful incident from past that there was a painter. उसने एक पेंटिंग बनाई. उसने वो पेंटिंग चराहे पे रखी और उसमें उसने लिखा हुआ था that इसमें जो जो गलतियां हैं पेन रखे कि जी जो जो गलतियां हैं उसको पिन पॉइंट. तो रात को जब वो वापस आके पेंटिंग लेके जाने लगा था तो इट वाज ऑल ब्लैक. ही कुडंट फाइंड इट आउट बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो आते जाते उसमें गलतियां निकालते. The other day he put up the painting, the same painting, and he said इसमें जो गलतियां हैं वो निकाल कर करेक्ट करके फिर है. When he came, रात को वापस गया, कोई उसमें कोई किसी किस्म की कोई भी changes नहीं हुई. Because the world we are surrounded with people who would always be there to find out your flaws, to identify your weaknesses that you are not capable of doing this or that. लेकिन उसको करेक्ट करने कोई नहीं आएगा. Nobody is going to be there when you need them the most. So who is going to be the motivation? You are going to stand, tall. You are going to keep your head up because you are going to motivate your own self. Nobody is going to help you out except for yourself. ये बात तो आप अपने साथ लीजिए. ना पेरेंट्स, ना सिबलिंग्स, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली, ना वाइफ, ना बच्चे, कोई भी नहीं. हर बंदा इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्चुअली जनरेट द हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स. हमारी जनरेशन का एक सबसे बड़ा मसला ये है that we are suffering from, आप अब उसको हम कह लेते हैं इनहेरिटेंट सैडनेस. यानी हम सबके अंदर इस सॉर्ट ऑफ सैडनेस जो कि इट इज देयर. The reason is that we try to find happiness. We are actually trying to search for it. दूसरों से हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमें बताएं कुछ कैसे रहना. दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें बताएं कि जिंदगी कौन से रास्ते पे चल. Nobody is going to decide this for you, dears. You are the ones. You are going to make your own way. तो आपने अपने आप को खुद मोटिवेट रखना है. थोड़ा सा फनी है, बट इफ यू फील डीमोटिवेटेड, इफ यू फील लाइक यू आर लूजिंग होप और एनीथिंग, लाइक लिटरली यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, टॉक टू योरसेल्फ, काउंसिल योरसेल्फ. नोबडी एल्स इज गोइंग टू काउंसिल यू. आपने खुद अपने आप की काउंसलिंग करो और बिलीव यू मी, यू लव. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम टू मी कि मैम मुझे ये मसला है, आई वांट कि मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, आई एम अनेबल टू keep myself motivated, I'm unable to study because I think low of myself, तो आप मेरी मदद. What I'm gonna do, I'm going to talk to you about few of your things and I'll just, like I am doing right now, I just say few things to you and that's all. I didn't make a difference. Who's gonna make a difference? You are the one who's going to make the difference. You would be the one who would be counseling yourself in front of mirror, telling yourself what to do, what not to. Do not give this authority to anybody in your life that they'll be deciding what is good for you and what's not. आपने CSS करना है, ये आपका डिसीजन है. मेहनत आपको करनी है, किताबें आपको पढ़नी है. फिर कोई और आपको क्यों बताए कि आपने क्या करना है? If you are in your room studying, someone else is comes in like यार इतना पढ़ना पड़ता है, दफा करो, ये कोई बात ही है. वो सर अली की बात याद आ गई है. He's like, what is the key to success? I love this thing when he says it. सर मोहम्मद अली खान साहब, मैं क्रेडिट भी हमेशा साथ दूँ. उसको कहते हैं, okay, if someone asks you what is the key to success, what would you say? सबने कहा जी key to success is perseverance, किसी ने कहा जी the consistency, this and that. He said नहीं, the key to success is ਤੁਹਾਨੂੰ की. Someone asks you why are you going for CSS, say ਤੁਹਾਨੂੰ की. Someone asks you anything which is not their problem, just tell them ਤੁਹਾਨੂੰ की. If I'm capable of doing it, I'll do it. You don't tell me what I'm going to do and what I'm not going to do. तो पहले तो ना अपने दिमाग को मैसेज. When I was studying psychology back then, we studied this concept. आप में से शायद कुछ psychology graduates यहाँ बैठे होंगे. I studied this concept जिसमें उन्होंने कहा था कि whatever signal you give to your brain, it works accordingly. So basically, you are the one who is commanding the brain and not the brain. मतलब आप जो सिग्नल उसको देते हो ना, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी मच लेजी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं उठ के कोई काम. इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस टू माई सेल्फ, दिल में कि यार मैं बहुत लेजी हो रही हूँ, आई कैन नॉट गेट अप, ये काम इतना है, कौन करेगा, जो दफा करो यार, आज नहीं करते कल. So what I'm going to indulge myself in procrastination कि मैं आज नहीं करी, मैं कल करूँगा, वो कल कभी नहीं आता. तो क्योंकि आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली काम करता है. जब आप बार बार खुद को ये कहते हैं ना, आपका ब्रेन कहते हैं यार ठीक है बस हो गया. ब्रेन भी एक्चुअली इट स्टार्ट गिविंग यू द सिग्नल्स दैट यस यू आर लेजी, लेट्स नॉट डू इट टुडे, विल डू इट टुमारो.
if you keep on sending the signals to your brain जो कि इस तरह से हो कि नहीं, I'm going to do it, it's very easy, I can do it, keep on repeating it to yourself, I can do it. Okay, अगर ऐसे का टॉपिक मुश्किल है, सर ने पढ़ाया नहीं हो रहा, I'll try, I can do it. मुश्किल है but achievable. So you give positive signals to your brain, trust me, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. That was something, of course, not from the behalf of academy or anything. चलिए जी, let's read your messages. Technology does no progress. Sanya Shaukat, it is not a serious concern at all. I already told you people, हर institution की कुछ policies हो. I cannot amend them. Nobody can. Okay? So we cannot go against it. Maybe it's, it's the copyright issues or anything. So I cannot help you in any way in this regard. I'm really sorry. ईमान बलोच, I have seen people qualifying जिन्होंने बिल्कुल simple private BA किया हुआ होता है पंजाबी में. Okay, ji, that's it. Let's wait for your teacher. वो आते हैं तो we'll get back to the lecture. Once you get enrolled, you have to wait. You don't have to rush. You don't have to जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी कि यार मैं अब कहाँ से नोट लूँ, कहाँ से लेक्चर लूँ. आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सारे टीचर्स खुद गाइड करेंगे कौन से बुक्स और नोट्स कहाँ से. You buy all the books in the world, trust me, you're not gonna read them. I know this. इसलिए अभी कुछ भी मत लो. Wait for your teachers to tell you what to buy, what. Kal before class, which means kal before 2:30 is the last deadline for fee submission. परसों की class would be private and only those who would submit the fee tomorrow would be able to attend day after tomorrow's class. Mark this, आप लिख लें अपने साथ जो भी आप notes वगैरह अगर बनाते हो. Tomorrow is the deadline. You might not extend the deadline anymore, so please be very careful. Get yourself enrolled as soon as possible. Anam, we do not know बेटे. It depends on the availability of teacher. कौन से सेशन में कौन से टीचर पढ़ाएंगे मैं आपको इतना पहले नहीं बता. पॉलिटिकल साइंस की 12 से 14 लेक्चर्स होते हैं. Mariam Afzal, we haven't decided anything yet. रमशा गफूर, मैं हूँ ना तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए, टेंशन क्यों लेते हो? I have successfully compiled. आप कह लो कि like batch 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And they all are with me, and I'm the one they direct their queries towards, and I don't think so they're not happy with me. Inshallah, I try my level best to resolve your issues during your tenure here. You don't have to worry about it. Mubashira, I love you for that. Yes, Cindy. Yes, Cindy would be offered this time. सादिया सियाल आपकी नहीं हुई अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो अब नहीं होगी. अब आपको थोड़ा फीस अगर आपने करा दी है तो वेट करना पड़ेगा हफ्ते डेट का, फिर करवा दूंगी. वजीहा, पर्सनल ऑप्शन बता रही हूँ, ओपिनियन बता रही हूँ. बेसिकली आई एम नॉट मेंटर फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन एनीथिंग.
लेकिन मेरे ख्याल से पंजाबी इज अ वेरी फाइन ऑप्शन, यू शुड गो फॉर इट। अनम इट्स लाइक टीचर ट्राई करता है कि वो सबके आंसर्स को करने की कोशिश करे, बट इफ यू कीप रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन समवन एल्स हैज ऑलरेडी आस्क्ड एंड टीचर हैज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू, तो फिर तो ऑफ कोर्स वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नहीं बेटा मुना, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, आपको मैंने पहले दिन बता दिया था 13th वुड बी द लास्ट डे, और कल मैंने आपको एक दिन की एक्सटेंशन दी। आई विल बी योर कोऑर्डिनेटर जब तक हम नया बैच नहीं ले लेते। वंस द न्यू बैच इज टेकन देन यू वुड बी हैंडेड ओवर टू समबडी। माय नेम इज महमूदा शाह, I'm अबिया खान, यू वुड नॉट बी, इंटरनेट का ग्लिच तो हर रोज भी आ सकता है पाकिस्तान में, दैट्स नॉट अ रीजन फॉर यू टू रीजन for us to give you an extra class, but in case of extreme emergency or anything, something which is beyond your control or which is we'll try to accommodate it, inshallah. No worries. Can you please include a detailed session of which subjects better score, which of them should be left alone? Nigat Marwat, you already had this session on the second day of our orientation. Pashto would be offered, Mohammed Tahir. पंजाबी की क्लासेस भी होंगी। इंग्लिश फाउंडेशन का अगर स्टार्ट हो भी गया बेटे तो यू विल हैव टू पे फॉर इट, दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स। इस्लामिक लॉ ऑफर इट्स सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल गो। मैं नहीं बता रही, एक बच्चा एक पूछता है सब्जेक्ट, बाकी सारे पूछने शुरू होते हैं, ये होगा वो होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन कौन से ऑफर। ओके, योर टीचर इज हियर, लेट्स वाइंड इट अप हियर। हसन, मैं आपको नंबर भेजती हूँ। जरा बड़ा खुश लग रहे हैं आप, लगता है कि we just watched this short नहीं, मैं सिर्फ movie or मैं ये something. कर रहा हूँ कि I've listened to some beautiful music in meanwhile, and thank you for keeping them company. मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि you have kept them busy. He said no, वो तो आपको पता है, that's my favorite thing to do. This seems to be a good batch. They are Inshallah, much more inshallah. disciplined. They are Yes, much I more have disciplined. observed this thing that they are very much disciplined. Nobody annotated, nobody turned the video on. That is like something I should be appreciating them for. Yes, they are. As compared to the one the batch that we have seen at 2:30. Okay. All right, बच्चों वापस आ जाओ, ज्यादा दूर तो नहीं गए खेलने के लिए। हाँ, okay, so they are coming back. Okay, that's nice. Okay, it's good. All right, so in this part of the lecture, we are going to see first of all जो essay marking criteria है, we're going to look at that first. So आपके काफी सारे क्वेश्चंस ना, अब मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दे ये दो पार्ट्स, तो काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी से मिल जाएंगे. So how CSS essay is marked? So the marking criteria of CSS essay from a CSS examiner's point of view. The first thing to remember is that your essay is marked according to 4 broad areas. अब जाहिर है कि 100 मार्क्स हैं तो उसको डिवाइड भी तो किया होगा ना. सारा जो आपकी एसे है
वो 100 मार्क्स में तो असेस नहीं की जाती। सो 4 ब्रॉड एरियाज हैं, जिसमें फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट, देन द लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड द कोहेरेंस। अगर आप गौर से देखें तो दीज आर द सेम एरियाज जो आपको सिलेबस में नजर आए थे, और जो आपको पेपर जब मैं दिखा रहा था सीएसएस का पेपर, तो उसके ऊपर भी यही वो चीजें थी। कंटेंट यानी रेलेवेंस, जो लैंग्वेज है वहां पे एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर, वहां पे आर्टिकुलेशन, इस तरह की सारी चीजें, कोहेरेंस। The although the examiners may differ on these things, but the FPSC currently is giving 40% weightage to the content, 25% to language, 20 to structure, and 15 to coherence. And you have to score in all these areas. ये नहीं हो सकता कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोहेरेंस बहुत, और कंटेंट अच्छा नहीं है तो भी one cannot pass. अगर कंटेंट बहुत अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो भी नहीं। यू हैव टू स्कोर इन ऑल दीज 4 एरियाज। सो कोशिश करें इन 4 एरियाज को सीखने की। हाउ, आगे चल के हम उसको भी कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ you have to score 40 out of 100 to pass the essay. You may take a screenshot if you like, because बाद में मुझे रिपीट करने को ना कहिएगा। This slide is complete. You may take a screenshot. Then we study all of these separately. What is content, language, structure, and coherence? I'm going to explain to you. What do we mean by content? When we say content, we mean your essay material. आप जो essay के अंदर जो information लिख रहे हैं, जो material दे रहे हैं, वो जी स्लाइड्स नहीं मिलेंगी, ये आप यहाँ से देख रहे हैं। दीज आर माय लेक्चर नोट्स। इनका क्या देना आपको? अगर आप यहाँ नहीं सुन सकते तो बाद में क्या इंपॉर्टेंस देंगे इनको? इसलिए मैं स्लाइड्स कभी भी शेयर नहीं करता कि जो स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं ध्यान दे रहा, उसने बाद में उसका क्या करना है उस मटेरियल का। 40 मार्क्स आर पासिंग कवल, यस। सो द ऐसे मटेरियल दैट यू गिव, जरा गौर से सुने ना, कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, आपका जो कंटेंट है, एग्जामिनर उसको उसका चाहेगा। आपसे कहा गया था ना रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज जो है वो रिसर्च बेस्ड है या नहीं। तो फिर हम अब उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि आपने जो टेक्स्ट, जो आपने कोटेशंस या जो मटेरियल जो आपने दिया है, जो जो इंफॉर्मेशन दी है, वो किस तरह से, क्या वो मतलब उसकी वो हेल्दी है, क्या उसका जो कलेक्शन का मेथड जो है वो प्रॉपर है, क्या उसकी जो इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको वैलिड भी है कि नहीं, कोई उसकी क्वालिटी भी है कि नहीं, या कि सिर्फ इधर उधर से बातें पकड़ के तो बस वो पैराग्राफ्स के अंदर लगा दी गई हैं। क्वांटिटेटिव वैल्यू, द फिगर्स, द स्टैटिस्टिक्स दैट यू गिव। आप में से जो रिसर्च के हैं वो तो जानते होंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। और क्वांटिटेटिव कि आप जो डेटा दे रहे हैं, वहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रेलिवेंट है, यहाँ पे रिक्वायर्ड भी है, वो किस तरह से आपकी जो आर्गुमेंट है उसको सब्सटेंशिएट कैसे करता है। हाउ डज द क्वांटिटेटिव योर डेटा it fulfill the quantitative requirements of the content. Validity, is it valid or is it outdated? क्या for example certain theories 90s की अब applicable नहीं है 20s में, 2020s में। certain theories, certain information which was, say for example, if it is outdated तो फिर valid नहीं है। reliable, क्या आपका सोर्स मतलब रेफरेंस देना होता है। जो लोग पूछते हैं कि जी कोटेशन लिखी है या इंफॉर्मेशन दी है तो फिर उसका सोर्स भी देना होता है। यस, देना होता है। तो क्या वो वैलिड सोर्सेज हैं? मसलन अगर कोई बंदा लिख देता है अकॉर्डिंग टू ए डॉन आर्टिकल, तो भाई डॉन के अंदर तो डेली 56 आर्टिकल्स छपती हैं, एंड डॉन इज पब्लिश्ड
365 days a year. So which one are you talking about? So you have to give the in-text citation properly. Is it reliable? क्या आप किसी इंटरव्यू में से लोगों में से किसी को बात किसी का ओपिनियन की बात कर रहे हैं? क्या आप प्रॉपर जो है वो रिसर्च बेस्ड वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? एंड देन वेदर इट इज रेलिवेंट और नॉट. रेलिवेंस एक बहुत बड़ा मसला है कंटेंट के अंदर कि लोग बेशुमार मटेरियल दे देते हैं. फॉर एग्जांपल, हम आजकल एक टॉपिक था स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. तो स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो लोगों ने डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के ऊपर ऐसे जो है वो लिखी हुई है. रेलिवेंस एक बहुत बड़ा इशू है और रेलिवेंस जो है वो दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन. काफी सारे लोग हम में से ये समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स टॉपिक को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं करते. 2020 के एग्जाम में एक टॉपिक है promoting tourism in Pakistan, prospects and challenges. Promoting tourism in Pakistan, prospects and challenges. अब उसके अंदर लोग जो कुछ लिख के आए हैं, ये जो इस साल एग्जाम हुआ, वो सारा टूरिज्म इन पाकिस्तान के बारे में, ज्यादातर टूरिज्म इन पाकिस्तान, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसकी थ्रेट्स, प्रॉब्लम्स क्या है, सारा कुछ. इट्स नॉट रेलिवेंट. एग्जामिनर क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर पूछ रहा है प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, यानी प्रमोशन के चैलेंजेस और प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं. लोगों ने प्रोमोटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया. वो अपनी मर्जी का समझ के, भाई आप टॉपिक के मुताबिक नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को क्या मुसीबत पड़ी है मार्क्स देने की. इट्स नॉट रेलिवेंट. नाउ लिसन टू दिस टॉपिक, स्ट्रेंथनिंग roots of democracy in Pakistan. Strengthening roots of democracy in Pakistan. Prospects and challenges. अब लोगों ने देखा डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, बस दौड़ लगा दी उसके पीछे, इसलिए कि वो रटा लगा के आए हुए हैं, रेडीमेड मटेरियल तैयार करके आए हुए हैं. डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आएगा, हमने उसके ऊपर लिखना है. वी आर नॉट आस्किंग अबाउट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. माई टॉपिक इज स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ, और वो भी रूट्स डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग. हमारा टॉपिक वो है. डेमोक्रेसी तो हमने तो नहीं पूछा आपसे. सो मतलब एक ऐसी कंट्री में जहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी बेसिस पे डेमोक्रेसी चलनी है, उन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है. वो हेरेडिटरी पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है. एक प्राइम मिनिस्टर था, उसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर बनी, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा. एक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी बेटी फिर पॉलिटिक्स में आएगी, उसका बेटा पॉलिटिक्स में आएगा. व्हाट इज दिस? इज दिस डेमोक्रेसी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू इंप्लीमेंट डेमोक्रेसी विद इन देयर पार्टीज, देन द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी स्ट्रेंथेंड. ये अप्रोच थी ना इसकी. नहीं, वो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, मिलिट्री गवर्नमेंट्स और जनाब ये हो गया वो हो गया, मुसीबत पड़ी हुई है, पूरी ऐसे लिखी हुई है, ऑल इररिलेवेंट. बड़ा अफसोस होता है देख के. डायग्राम्स दिए हुए हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, पूरी पूरी ऐसे, बड़ी अच्छी ऐसे लिखी हुई है. अगर वो होती डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो दैट वुड हैव बीन अ गुड ऐसे, बट द टॉपिक इज नॉट दैट. सो रीड द टॉपिक एंड राइट अकॉर्डिंगली. अगर आप उसके मुताबिक रेलिवेंटली नहीं लिख सकते तो फिर सीएसएस किस चीज का भाई? Be responsible for what you're doing and read the whole of the topic. ये नहीं कि आपको जो हिस्सा पसंद आया, what I call wishful reading. Wishful reading. भाई मेरे ख्याल में टॉपिक इस तरह से है और उस तरफ देख के तो उसको चल पड़ते हैं. So your content, is it relevant to what has been asked or not? जी गुल साहिबा, I will not turn off the chat. I keep communicating with the students क्योंकि मुझे continuously feedback चाहिए होता है कि आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और वो सारा कुछ जो है. तो दूसरी बात ये है कि मैं एक इंटरैक्टिव टीचर हूँ. मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो खड़े होके एक दफा लेक्चर स्टार्ट हो गया, घंटा डेढ़, तो उसके बाद पता ही कोई नहीं स्टॉप कहाँ जाता है. I take frequent stops. And especially इस किस्म की पब्लिक क्लास में it is my responsibility to respond to the questions. So आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे चैट से, मैं नहीं डिस्टर्ब होगा. आप अपना फोकस आप ऑफ कर दे अपना माइक जिस वक्त मैं उस पर स्लाइड पे जाऊंगा,
उस वक्त आप ऑन कर लीजिएगा। Rubali, normally it is APA. It is normally it is APA. जो डायग्राम्स मस्त नहीं है कवल, आई डिडंट से दैट। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ने बेचारी ने बड़ी मेहनत की हुई है। पहचान हाउ टू क्रैक द टॉपिक स्टेटमेंट, ये बाकायदा मतलब वो है, ये चीज जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। और हर लेक्चर में वी इंटरप्रेट टॉपिक, इंटरप्रिटेशन, क्रैकिंग द टॉपिक, 4, 5, 6 मिनिमम 7, 8 टॉपिक्स हम एवरी टॉपिक में हम उसको इनको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे डिस्कशन फोरम भी बनाने का मकसद यही था कि ऐसे डिस्कशन फोरम के अंदर भी आई कीप इशूइंग न्यू टॉपिक्स एवरी 10 days और 2 weeks। लोग उसके ऊपर आउटलाइन जो है बनाते रहते हैं फिर स्टूडेंट्स, और आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। और वही जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूं वही मेरा गेस है पूरे साल का, नेक्स्ट ईयर के पेपर के लिए। आई डू इट एवरी ईयर। तो वो अगर आप उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं और आउटलाइंस लिखते रहते हैं और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो उन सब की वो तैयारी हो रही है। देखिए, यही रीजन थी कि इस साल 2020 में जो पेपर आया है, हम लोग नोआ में 10 में